Okay, guys, a very warm welcome in today's session. Now we are going to get started with 2026 Global Automotive Consumer Study by Deloitte. Okay. In the previous session, we have identified what a data analyst will target in terms of role and companies. Okay. We have decided that in the previous session. And then we have initiated that let's see how a company like Deloitte, you know, what it does and what a typical data analyst at Deloitte does. Okay. So that is what we are going to understand, what skill sets he must have in order to do justice to the data analyst role at Deloitte. Okay. So what kind of analysis they are generating, or what kind of reports they are making, what kind of descriptive analytics they are doing across what industries. That is what we have to understand out of this project. Okay. So our project name is, let's say we are taking the same name as the project name, which is 2026 Global Automotive Consumer Study. So अब इसमें कहता है कि Deloitte क्या कर रहा है, दे आर ट्रैकिंग कंज्यूमर ट्रेंड्स इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री. ठीक है, कंज्यूमर के क्या ट्रेंड्स हैं वो ये आइडेंटिफाई कर रहा है. ठीक है, कंज्यूमर के ट्रेंड्स. कंज्यूमर ट्रेंड से क्या समझ रहे हो? कंज्यूमर क्या खरीद रहा है, सिंपल सी बात हो गई. कंज्यूमर का क्या इंटरेस्ट है, कंज्यूमर का बाइंग पैटर्न ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में कैसे चेंज हो रहा है, हाउ हाउ द कंज्यूमर इज प्रैक्टिकली बिहेविंग इन दैट इंडस्ट्री. ठीक है. सो इसका मतलब क्या है, अगर तुम अपने प्रीवियस टॉपिक्स को अगर ध्यान दोगे, सो दिस इज डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स. व्हाट इट इज? डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स. They are trying to identify what happened in data, and this data is from automotive industry, and it is from the customers, it is from the consumers. Okay. अब आगे इसको देखेंगे, समझेंगे. सो अभी अगर आप देख रहे हो, वी आर टारगेटिंग ऑटोमोटिव इंडस्ट्री और हमारा ऑब्जेक्टिव है आइडेंटिफाई करना कंज्यूमर ट्रेंड्स. ठीक है. तो मान लो अगर आपको एक डेटा एनालिस्ट की तरह से डेलॉयट हायर कर लेती है और आपसे पूछती है कि भाई मुझे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में कंज्यूमर ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करने, मुझे बताओ. सो ये आपको करना पड़ेगा. सिमिलरली वो आपसे कह सकती है कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री के ट्रेंड्स बताओ, वो आपसे कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के ट्रेंड्स बताओ, या एनर्जी इंडस्ट्री के ट्रेंड्स बताओ, या आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री के ट्रेंड्स बताओ, या ट्रेंड्स बताओ मुझे सिर्फ नॉर्थ अमेरिका रीजन के. ठीक है. या मुझे सिर्फ यूरोप के ट्रेंड्स बताओ, या सिर्फ मुझे इंडिया के ट्रेंड्स बताओ. सो इट डिपेंड्स अबाउट व्हाट इज द रिक्वायरमेंट of the organization. It will speak to the data analyst, and now the data analyst has to start working on it. ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई. सो जो प्रैक्टिसेस आप इसमें इंप्लीमेंटेशन करोगे, जो स्किल्स आप इस प्रोजेक्ट में अप्लाई करोगे, वही आप सिमिलर इंडस्ट्री के लिए भी यूज कर सकते हो. ठीक है, और डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए भी यूज कर सकते हो. नाउ सो अब इसके आगे ये कहता है, what consumer trends and disruptive technologies will have the most impact on automotive industry in the coming year. अब ये क्या है? This is predictive analytics. What are they trying to do? They are trying to perform predictive analytics here. Okay. यानी अगर इस चीज को देखो तो दे आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर. यही बात है. ठीक है, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं वो? देयर ऑब्जेक्टिव इज टू आइडेंटिफाई व्हाट कंज्यूमर ट्रेंड्स, what disruptive technologies will have the most impact. अब व्हाट इज एन इम्पैक्ट? ठीक है, इम्पैक्ट क्या, ये हमें पता होना चाहिए. इम्पैक्ट अक्रॉस बाइंग, इम्पैक्ट अक्रॉस सेल्स, इम्पैक्ट अक्रॉस रेवेन्यू, इम्पैक्ट अक्रॉस
environment, impact across utility, impact across easiness, convenience, impact किस किस एंगल में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है. So that needs to be understood. I believe this is clear. On the automotive industry in the coming year, ठीक है, यानी 26-27 की स्टडी करना चाह रहे हैं. ओके, नाउ सो हम इसमें क्या करेंगे, वी विल एक्सप्लोर द की फाइंडिंग्स. ओके, फ्रॉम देयर 2026 ग्लोबल ऑटोमोटिव कंज्यूमर स्टडी इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिफिकेशन अडॉप्शन. ठीक है, सो इम्पैक्ट किस किस एरिया में वो मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन अडॉप्शन. कितने कंज्यूमर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स परचेज करेंगे या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ स्विच होंगे. एक्चुअल डेटा क्या बोलता है, ठीक है, एक्चुअल ट्रेंड क्या बोलता है, और फिर ये किसको बेच देंगे, ये बेच देंगे वोल्वो को. ये पूरी एनालिसिस कंडक्ट करने के बाद वोल्वो, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, ऑडी, वोल्क्सवैगन, हुएवर वांट्स टू बाय दैट एनालिसिस फ्रॉम देम, जो भी बना रहा है, बीवाईडी, टेस्ला, XYZ, ठीक है, दे कुड बी डिफरेंट कंपनीज. सो अब जरूरी नहीं है कि टेस्ला अगर गाड़ी बना रहा है तो टेस्ला ही मार्केट रिसर्च कर रहा हो, ठीक है. हो सकता है वो डेलॉयट से मार्केट रिसर्च ले, डेलॉयट से उसकी अंडरस्टैंडिंग ले, और उस बेसिस पे उतनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाए और बेचने की कोशिश करे कि किस रीजन में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ज्यादा डिमांड बढ़ रही है, तो वो उस रीजन में फोकस करेगा अपनी गाड़ियों को बेचने के लिए. एंड दैट इज हाउ दे जनरेट मैक्सिमम प्रॉफिट्स. ठीक है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस और बड़ी क्यों होती जाती हैं, बिकॉज दे हैव द करेक्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. और वो खुद सारी एनालिटिक्स नहीं करती, वो तो अपना दे सॉल्व वन प्रॉब्लम फॉर मेनी पीपल अगेन एंड अगेन. ठीक है, so they will ask an organization like Deloitte who will do it for them. ठीक है, so Deloitte क्या करता है, कई बार वो मांगते भी नहीं है, ये लोग करते हैं पूरी एनालिसिस और इनसाइट्स, और उसके बाद ये बेचते हैं अपनी इनसाइट्स टू डिफरेंट कंज्यूमर्स, टू डिफरेंट बिजनेसेस अक्रॉस द वर्ल्ड. ठीक है, अब अगर तुम ये सोचो कि ये आर्टिकल डेलॉयट ने क्यों डाल रखा है, ये आर्टिकल डेलॉयट ने इसलिए डाल रखा है कि जो लोग ऑटोमोटिव गाड़ियां बेच रहे हैं वो डेलॉयट के साथ आए और डेलॉयट के साथ डिस्कशन करके क्या है, कैसे इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, गाड़ियां बेचने के लिए, इलेक्ट्रिफिकेशन अडॉप्शन के लिए, या कनेक्टिविटी फीचर्स के लिए. ठीक है, या अपनी ब्रांड लॉयल्टी बढ़ाने के लिए, और भी अदर जो इम्पैक्ट फैक्टर्स हैं. ओके, ये बात क्लियर हो गई. ठीक है, कनेक्टिविटी फीचर्स हो गए, ब्रांड लॉयल्टी हो गई, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते. ओके, दिस इज क्लियर. यहां तक ये बात समझ में आ गई. चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ सो ये ऑथर्स हैं लीजा वॉकर, डॉक्टर हरल्ड प्रॉफ. दीज आर द पीपल एक्चुअली वर्किंग ऑन दिस केस स्टडी. ठीक है, एंड हियर इज द लिंक टू डाउनलोड द पीडीएफ and view the PDF. We'll copy this link address here on our consumer study report. ठीक है, so we got that consumer study. Global Automotive Consumer Study 2026. ठीक है, so here is this official document from Deloitte. Let's say together let's make progress. इन्होंने की ग्लोबल फाइंडिंग्स डाली है, अपना ये सारा पूरा रिपोर्ट डाला है. लीजा वॉकर एंड डॉक्टर हराल्ड प्रॉफ. ठीक है, Lisa Walker at Deloitte.com. She is US automotive sector leader and he is global automotive sector leader. ठीक है, so suppose you want to work in automobile industry, you should follow these guys. Connect them with on LinkedIn. ठीक है, and you can eventually write them an email that you are interested to work. Obviously, मतलब opportunity has to be discovered. Okay, so if you will work on the challenges which both of these guys are facing,
then you can make a lot more difference. Okay. Let's say, so we can do a lot of, detailed analysis across it about how to go about, you know, the prop roles. Let's say I just go to LinkedIn. Why I'm telling you this, for the very next time, whenever you guys will get into analysis of such, documents or so, obviously you should, you know, try to connect with the relevant people in the industry. And that is how your network is going to change. Is here. Harald Prof, partner at Deloitte. Partner at Deloitte Consulting, Germany. Okay. क्या गया बंदा? Connect. ठीक है. बाद में with a note भेज देना. When you will send, just send it with a note. Okay. Now, now you can see. So what are they attending? Last month he attended Join Me at the Mobility Innovation Summit in Berlin. Okay, so they might be speaking on something. Just hear about them. What are they talking about? Okay, with what is troubling them on the basis of their conversations. Their conversations are going across what kind of challenges, so that will make you more relevant. Okay, this will make you more informed about what problem statements you should work on, and that is how you will be able to position yourself in the industry. Okay, is that clear? Connect with Lisa Walker as well, and that is how one by one you will get to know people already working at those organizations, and you can walk on that path how they have walked, and how you can be a part of that. Because eventually what you have to change is you have to change your environment and your network. Okay, and you have to position yourself there. You have to be discovered by these people. So if these people discover you about what relevant you're doing in this industry, that will make a lot more sense, and that will bring you more opportunities. Clear? Nobody is going to tell you this, but this is very, very important. Okay, see what are their challenges and start talking about it on LinkedIn, and tag them sometimes. Seek for their guidance, seek for their, and people come, people talk. These people at, top roles, they are always open to discuss if you are talking relevant stuff with them. Okay, now, सो अब क्या करना है हमें? हमें दो बंदे भी पता चल गए, लीजा वॉकर एंड हरल्ड प्रॉफ. लीजा वॉकर को भी भेज देते हैं इसी समय पे, पता चलेगा ना लीजा वॉकर भी क्या कर रही है. ओके, लीजा वॉकर टैलेंट रिक्रूटर एट नेटफ्लिक्स. कोई बात नहीं, अभी तो हम डेलॉयट की तरफ जा रहे हैं. चलो, या हियर इज शी, वाइस चेयरमैन एंड यूएस ऑटोमोटिव सेक्टर लीडर. Okay, so now she is in Chicago, US, Deloitte. Okay, and what is she posting? You can check some of her. 1 month back, she posted on something. Great perspective from here. Quality, warranty, safety are becoming increasingly strategic priorities for automotive leaders. Organizations that embed quality within the heart of the business are better positioned to navigate complexity and deliver stronger customer outcomes. Okay, so you can go and see that what kind of challenges these guys are dealing with, what are they posting. Okay, what are they, 1 month back, she just posted something, and if you see, they tag all these important people also, those who are in that organization. Okay, and that is how you can start connecting with them. Is that clear? So that is how you will start finding your network. So when everybody in that organization knows you, eventually it becomes easier. Okay, you can approach them, and you can move out to, you can position yourself accordingly. Okay. Now, so I just want you to be around those leaders, so that you will start thinking, you will start getting that information
in your environment on which you have to focus, on which these leaders are focusing. Okay. And what you have to do, you have to do data analysis around quality, of how that quality can be improved. Okay. Whatever they are talking, you should have a base case study or something implemented across this. And today you have chat GPT and intelligence available just at your hands. So you can do wonders with it. Okay. Are you understanding my point? So आप कमाल की चीजें कर सकते हो. मतलब now your conversation let's say must be around automotive study, तो हम करने जा ही रहे हैं. पर मैं ये भी बात करूंगा कि ठीक है, how will you navigate increasing complexity and risk. ठीक है. So they are saying automotive leaders should shift from viewing quality as a compliance exercise to embedding it as a core value that drives sustainable competitive advantage. Okay, go through with that article and see how you can, perform an analysis across complexity and risk with respect to value, with respect to, sustainable, what do we say? Uh, uh, Quality with respect to, compliance exercise. All of this can be done. So they have that data available and you can analyze across it. Okay. Now, खैर अभी हम वापस आ जाते हैं तो इसको पढ़ना, एडवांसिंग अ कल्चर ऑफ क्वालिटी इन ऑटोमोटिव, और इसको बिल्कुल इजीएस्ट लैंग्वेज में कन्वर्ट करो. ठीक है. नाउ शी इज लिबी रूप, डेलॉयट रिस्क एंड फाइनेंशियल एडवाइजरी प्रिंसिपल, कनेक्ट विथ हर, हैव अ कॉन्टैक्ट नंबर. ठीक है. So eventually that is how you can start, building your network, and you'll know people one by one, and you'll see what are they communicating, what are they conversing, and you should have that communication. Okay. Because you have to be a part of their tribe. So once you are a part of their tribe, you will eventually be doing good, because that is how your network will define you. Okay. Your network will place you at the where your success will be defined by the network which you will have. Okay. I believe this is clear. And you have to start creating your network. And the network compounds. The opportunity which you will get in life beyond your capacity is only with your network. Okay, clear? बात समझ में आ गई? हेलो पुरुषोत्तम, सिमरन, सो तो नहीं गए? यस सर. नहीं. कह रही सिमरन, अरे सर इनको कैसे मैसेज डालेंगे? अरे आज नहीं डालना है, डाल देना आराम से. हाँ सर. सिमरन तो अभी परेशान हो गई, सर मेरे को तो इंडिया में ही रहना है, मेरे को तो जाना ही नहीं है. नहीं सर, ऐसा नहीं है. अच्छा. ओके. ठीक है. मतलब व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल ऑफ दिस इज सो दैट यू कैन स्टार्ट थिंकिंग बिग. ठीक है. जब तुम्हारा थॉट प्रोसेस चेंज होगा ना, तब उस बेसिस पे तुम एनालिसिस, इम्प्लीमेंटेशन, पाइथन कोड, तब तुम उस लेवल का लिख पाओगे, जब तुम्हारा थॉट उस लेवल से चलना स्टार्ट करेगा. ठीक है. एक्चुअली क्या है, लाइब्रेरीज तो सेम है, लाइंस ऑफ कोड भी सेम है, फंक्शंस भी सेम है. तो फिर एक बंदा 10 लाख कमाता है, एक बंदा 10,000 कमाता है. क्यों? Because of his thought processes and how he implement and execute his thought processes, and how people will perceive the information which he will share. Okay. And how people will read value out of that information. Okay. So value वाला ग्राफ मैंने तुम्हें बताया था, जितना ज्यादा sophisticated implementation होगा या thought process होगा, उतनी ही better value drive कर पाओगे. ठीक है. And value is important. चलो. सो ये डाउनलोड करना है. ठीक है. सो अब इसके अक्रॉस हम इसको पढ़ेंगे, समझेंगे कि व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू, एंड वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट. सो हमने लास्ट सेशन में डिस्कशन यहां से स्टार्ट किया था कि डेलॉयट का आर्टिकल एक्सप्लेन करता है हाउ द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इज बीइंग रीशेप्ड बाय चेंजिंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस. ठीक है. अराउंड अफोर्डेबिलिटी, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, इलेक्ट्रिफिकेशन, कनेक्टिविटी, एआई एंड सर्विस एक्सपीरियंस. ये 6 इम्पैक्ट फैक्टर्स है. ठीक है. The study is based on insights from more than 28,500 consumers across 27 automotive markets worldwide. Okay. अब मैं यहाँ पे इस पे लिख देता हूँ, साथ में मैं एक गूगल का भी ओपन कर देता हूँ, so that you will have more knowledge. Okay. Let's say I'll write what are the top 27 automotive markets in the world. Okay. पता कैसे चलेगा?
पता भी तो चलना चाहिए। एक लाइन हमने पढ़ ली, मान लो 27 ऑटोमोटिव मार्केट्स हैं, बट हु आर द लीडर्स? ओके, सो नाउ लेट्स से द लार्जेस्ट वॉल्यूम इज एशिया पैसिफिक. Okay, so if you see China, the largest vehicle market globally, contributing roughly 30% of the entire world sales. ठीक है, वर यू अवेयर कि अब ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जिस पे तुम फोकस करने जा रहे हो उसमें चाइना वर्ल्ड लीडर. उसके बाद देखो इंडिया. इंडिया होल्ड्स द थर्ड स्पॉट ग्लोबली विथ इमेंस ग्रोथ इन पैसेंजर एंड कॉमर्शियल सेगमेंट्स. ओके, जापान, a historically dominant luxury and hybrid market, sitting firmly at fourth. Japan is fourth. Then you have South Korea, you have Australia, you have Indonesia, you have Malaysia, Thailand, Vietnam. Then you have Europe. Okay. In Europe, you have Germany, UK, France, Italy, Spain, Turkey. Then you have Americas, where you have US, Brazil, Canada, Mexico, Argentina, Middle East. Okay. So these are the markets. Okay. Is that clear? Yeah. So let us just break them down on the basis of this. इलेक्ट्रिक व्हीकल ग्रोथ रेट्स, टोटल एनुअल यूनिट सोल्ड एंड कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर के बेसिस पे इन्होंने चेंज कर दिया. ठीक है, सो अब देखो अब तुम्हें क्या मिला. अब तुम्हें यहाँ पे एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन मिली. A systematic breakdown of the top 25 automotive market covers electric vehicle growth rate and total annual and consumer buying behavior based on latest metrics from International Energy Agency, IEA and OICA. ठीक है, so these guys have the data. ओके, तो अब ओरिजिनल डेटा तुम्हें कहां से मिलेगा? यहां से मिलेगा. ओके, electric car sales top 20 millions globally 2025. They have certain set of data which they are implementing across different countries. ठीक है, ये अब देखो ये तुम्हारा जॉब है एक तरीके का कि इस तरीके के ग्राफिकल तुमको इम्प्लीमेंटेशंस करने हैं अक्रॉस डिफरेंट कंपनी कंट्रीज. ठीक है, तो अब देखो अब हो क्या रहा है यहाँ पे. Now you have to see how this is a meaningful graph. Okay, जैसे आप देखो, this is China 14.3 million, Europe 5 million, United States 1.2 million, rest of the world is 2.9 million. So now you should be able to make a graph like this. Are you understanding my point? जब आपके पास डेटा आएगा तो एनालिसिस करने के बाद अभी क्या हो रहा है, अभी तो हम सिर्फ ये दिखा रहे हैं व्हाट हैपेंड इन डेटा. ठीक है, डेटा में क्या हुआ. सो across different set of countries, okay, and how that representation is happening, what is the meaning of that representation, how it is mapped across different countries, and different number of दूसरा है इसके पास कार सेल शेयर है, परसेंटेज शेयर है ऑन एक्स एक्सिस. ठीक है, then a lot of different insights are available over here. We'll actually check the data set also. So whatever data is public, and on the basis of that public data, we will also do certain implementations across it. Okay, can you see this? Okay, so they have done a lot of different analysis and they have used some fantastic set of graphs in order to expose the information. Okay, what happened? Why did it happen? Okay, bye. And what are they embedded in the sections cost price data? Okay, ठीक है, ये हम देख लेंगे, डेटा सेट निकाल लेंगे इसका. ठीक है, ये भी डाल देते हैं, इसको सेव कर लेते हैं इंफॉर्मेशन को. अभी हम क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट ट्राइंग टू डू अ फीजिबिलिटी काइंड ऑफ स्टडी अक्रॉस व्हाट इज हैपनिंग अक्रॉस दिस. ठीक है, और फिर हम अपना एक ओरिजिनल डेटा सेट कलेक्शन करके उसके ऊपर फिर हम अपनी डेटा एनालिसिस परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे. ओके, ये बात क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, सेकेंड वन इज दिस ओआई. Yes, sir. Auto industry growth shifted east in 2025 and global repositioning. Global auto industry repositioned in 2025 as growth shifted to east, OICA says in Beijing. ये अप्रैल 2023-2026 का डिस्कशन रिपोर्ट इन्होंने यहाँ पे पब्लिश किया है. ठीक है, where they have maybe discussed appropriately about what is the exact number of
sales and everything is happening across different set of countries in terms of your electric vehicles segment. तो इसको डाल देते हैं यहाँ पे. ठीक है, ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रिक कार्स आ गया हमारे पास. एक हमारे पास आ गया ऑटो इंडस्ट्री ग्रोथ. ठीक है, अभी हम अपना क्या कर रहे हैं, एक फिजिबिलिटी स्टडी कर रहे हैं एक तरीके से, जिससे हमें ये नॉलेज मिल जाए कि इन्वायरमेंट में हो क्या रहा है अक्रॉस कंज्यूमर स्टडी. ठीक है, तो अब तुम्हें दो चीज पता चल गई. एक तुम्हें पता चल गया कि डेलॉयट ने ऑटोमोटिव कंज्यूमर स्टडी की. ठीक है, वो कंज्यूमर स्टडी उन्होंने किस लिए की, टू आइडेंटिफाई कंज्यूमर ट्रेंड्स अक्रॉस अफोर्डेबिलिटी, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑल्सो. ठीक है, ये फैक्टर्स हैं अफोर्डेबिलिटी, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, इलेक्ट्रिफिकेशन, कनेक्टिविटी, एआई एंड सर्विस एक्सपीरियंस. ठीक है, और 28,500 कंज्यूमर्स इन्होंने पकड़े 27 ऑटोमोटिव मार्केट्स में. तो अब तुमको ये पता है कि ये मार्केट्स कौन कौन सी हैं वर्ल्ड में. चाइना है, इंडिया है, जापान है. ठीक है, दीज आर द वर्ल्ड मार्केट्स. ओके, इंडिया कौन से पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे है. नाउ यू आर क्लियर विद दैट. ठीक है, नाउ अब ये जो इंफॉर्मेशन सब मिल रही है, ये भी कैसे मिल रही है, सम डेटा एनालिस्ट्स आर डूइंग इट ऑन दोज ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, मतलब अगर कोई बोल रहा है कि इतनी नंबर ऑफ सेल्स हुई, तो कहीं से तो डेटा आया ना, किसी ने तो एनालाइज किया. किसी ने एनालाइज करके वो ग्राफ्स प्लॉट करने के बाद कंफर्म किया कि ठीक है, चाइना इतना बड़ा लीडर है, इंडिया ने इतना बेचा, या जो भी डिफरेंट कंट्रीज हैं उन्होंने एक रेस्पेक्टिव सेल्स किया. बात समझ में आ रही है नाउ? ठीक है, अभी हम इस यहां तक पहुंच चुके हैं. अब आप ये देखो, the automotive industry is not changing only because of technology. It is changing because customers are becoming more value conscious. ठीक है, rising vehicle prices and higher financing costs are making affordability a major decision factor. ओके, यानी व्हीकल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, और जो लोन कॉस्ट है, ईएमआई कॉस्ट है, वो भी बढ़ती जा रही है. इसकी वजह से लोगों को क्या हो रहा है, अक्रॉस डिफरेंट मार्केट्स दे आर ट्राइंग टू प्रेफर अफोर्डेबल कार्स, और अफोर्डेबिलिटी उनके लिए अब एक मेजर डिसीजन फैक्टर बनता जा रहा है. ठीक है, नाउ कंज्यूमर्स नाउ एक्सपेक्ट ब्रांड्स टू ऑफर नॉट जस्ट क्वालिटी एंड इनोवेशन, बट ऑल्सो फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट एंड लॉन्ग टर्म वैल्यू. ठीक है, ये भी आइडेंटिफाई हो रहा है कि प्राइसिंग फेयरनेस होनी चाहिए, और जो भी अगर मैं सस्ते में भी खरीद रहा हूं या एक फेयर प्राइस पे खरीद रहा हूं, आई शुड गेट अ लॉन्ग टर्म वैल्यू अक्रॉस दैट व्हीकल इफ वी आर बाइंग. ठीक है, सो अब इन्होंने आइडेंटिफाई किए देर आर सर्टेन की ट्रेंड्स, 5 की ट्रेंड्स फ्रॉम द स्टडी. ओके, सो जैसे इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड है वो अनइवन है. ठीक है, विच मीन्स फुल इलेक्ट्रिक व्हीकल डिमांड इज नॉट ग्रोइंग इक्वली एवरीवेयर. ऐसा नहीं कि हर जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ रही है. ठीक है, सो अब क्या होता है कि जो कंपनियां हैं जो ये ईवी बेच रही हैं, दे कैनॉट यूज वन ग्लोबल ईवी स्ट्रैटेजी एवरीवेयर अक्रॉस ऑल डिफरेंट सेट ऑफ कंट्रीज. वो ये नहीं कर सकती. ठीक है, उनको हर कंट्री का या हर मार्केट का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. उस बेसिस पे दे विल पोजिशन देयर car sales across it. Okay, so what they need is they need country wise electric vehicle, hybrid and ICE plans. Okay, so मतलब एक तरीके से समझ लो, जो भी इनसाइट्स हैं वो उसे कंट्री वाइज मिलनी चाहिए, तब एक कंपनी प्रॉपरली बेच पाएगी. ठीक है, तो अब वो कंपनी क्या कर रही है, डेलॉयट से डेटा परचेज कर रही है, और डेलॉयट का अगर एक बढ़िया डेटा एनालिस्ट होगा जो इस तरीके से सोच सकता है, वही तो वैल्यू जनरेट कर पाएगा, तभी उसको एक हाई वैल्यू ऑफरिंग कर पाएगा. लेट्स से बीएमडब्ल्यू को या उसको, बिकॉज उनकी ऑपरेशन कॉस्ट तो हजारों करोड़ों में है. अगर उनका एक डिसीजन गलत बैठ गया गलती से, तो उनके तो पूरा मे बी फॉर्च्यून खत्म हो जाए. बात समझ रहे हो? बिकॉज एक बार अगर गाड़ी बना करके बेचना है तो गाड़ी तो पहले बनेगी ना, तब जाके बिकेगी मार्केट में. ऐसा तो है नहीं कि कस्टमर पहले पैसा दे देगा और फिर उसके बाद वो गाड़ी बना के दे देंगे. सो दे हैव टू मैन्युफैक्चर एंड देन दे हैव टू पोजिशन इट अराउंड इट. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक गाड़ी बनाना ही काम है. There are a lot of teams across it. Okay, there's a lot of technology around it. Are you understanding my point?
बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। सो अब अगर देखोगे तो बहुत सारे ट्रेंड्स आइडेंटिफाई हुए, यानी हाइब्रिड इंटरेस्ट इज राइजिंग. Many consumers are preferring hybrid cars because they reduce fuel cost without full charging dependency. तो हाइब्रिड के लिए ज्यादा इम्पैक्ट है. ठीक है. सो ऑटोमेकर शुड कीप हाइब्रिड ऑप्शन स्ट्रॉन्ग, स्पेशली वेयर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज वीक. ये इंडिया में भी प्रॉब्लम है. ठीक है. इंडिया में हर जगह तो चार्जिंग स्टेशन है नहीं, और चार्जिंग बहुत टाइम लेती है. तो अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हो और चार्जिंग खत्म हो जाएगी, तो ऑब्वियसली यू नीड टू यू नो fill that fuel, petrol या whatever it is. ठीक है. देन ब्रांड लॉयल्टी इज चेंजिंग, ये इन्होंने आइडेंटिफाई किया. सो इनको क्या पता चला, सम मार्केट्स रिटेन लॉयल बायर्स while others have more first time buyers willing to switch brands. So brand must improve customer experience, pricing, after sale support and trust. नहीं तो क्या होगा कि कोई भी नई ब्रांड खरीद लेगा. जैसे अगर आप अभी रिसेंटली देखो, कस्टमर्स बीवाईडी बहुत खरीद रहे हैं इंडिया में. इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में बीवाईडी बहुत बिक रही है. बिल्ड योर ओन ड्रीम्स. बीवाईडी का कार देखी तो होगी आप लोगों ने, जिसको एक बार टेस्ला एलॉन मस्क ने बोला था ये तो घटिया गाड़ियां बनाते हैं, इनको गाड़ियां बनाना भी नहीं आता है. दे आर नॉट कार मेकर्स लाइक दैट. आज अगर इंडिया में सेल्स देखी जाए तो बीवाईडी इज डूइंग वेरी गुड. बीवाईडी के नंबर्स बहुत ज्यादा हैं, जबकि बीवाईडी ने ऐसा कोई ट्रस्ट अर्न नहीं किया था. ठीक है. दे वर फर्स्ट टाइम ऑफरिंग्स भी पीपल हैव एक्सेप्टेड. सो लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैसे पहले होता था कि नहीं मैं तो टाटा की ही गाड़ी खरीदूंगा, या मैं तो सिर्फ महिंद्रा की ही गाड़ी खरीदूंगा. ठीक है. दैट वाज ब्रांड ट्रस्ट, दैट वाज लॉयल्टी. ठीक है. अब ये आइडेंटिफाई हो रहा है कि इलेक्ट्रिक मार्केट के सेगमेंट में पीपल आर गोइंग फॉर फर्स्ट टाइम बायर्स भी ज्यादा बन रहे हैं. ठीक है. सो ऑल ऑफ दैट इज एन इंफॉर्मेशन फॉर न्यू पीपल टू कम इन टू एंटर द मार्केट. ओके. आर यू क्लियर विद दिस थॉट, विद दिस एनालिसिस? सो ये सारी इंफॉर्मेशन डेलॉयट ने आइडेंटिफाई की ऑन द बेसिस ऑफ डेटा. ठीक है. अब वो हम डेटा कलेक्शन करेंगे और उसके ऊपर हम देखेंगे कैसे हम काम करेंगे. ठीक है. So now they say connected features matter, but privacy is a concern. So companies must clearly explain what data is collected and how it is protected. जो यूजर्स का डेटा जैसे आ रहा है ना आजकल, इंटरनेट इनसाइड, यू ऑल आर कनेक्टेड विद इंटरनेट विद इन द कार इटसेल्फ. आपके पास इंटरनेट हो नहीं हो, आप कार में इंटरनेट है, जैसे एमजी की गाड़ियां आती हैं. सो व्हाट काइंड ऑफ डेटा यू आर कलेक्टिंग while a user is using your technology, and how you are processing that data, how you are protecting that data, that is also becoming a major concern for people. So privacy, security is becoming a big concern. Okay. Then AI and OT updates are becoming attractive. Service quality is critical. So these are some of the interpretations which are being identified in that report. ठीक है. So data analysts ने identify किया इस particular information को. So अब हमें क्या करना है? So interpretation ये आया that the customer is no longer buying only a vehicle. The customer is buying affordability, trust, convenience, safety, software experience, and long-term service confidence. Okay. This is what something which that report has to say. Okay. I believe this is clear. अब हमें क्या करना है? Now we will see कि ये जो इंफॉर्मेशन मैंने देखी कि किस तरीके से डेटा एनालिसिस हुई. Now what is the framework which I'm going to follow? What is the framework which I'm going to follow and perform data analysis in order to do descriptive analytics across automotive data? ये मेरा काम है. ठीक है. इसके लिए हम एक फ्रेमवर्क यूज करेंगे. ठीक है. और वो फ्रेमवर्क यूज करके वी विल बी एक्सट्रैक्टिंग नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन अक्रॉस इट. ओके. दिस इज व्हाट वी हैव टू अचीव. ये देख रहे हो? कैन यू सी दिस काइंड ऑफ ग्राफ which is available in front of you? So जैसे ये दिखा रहा है distribution of range of battery. So typical daily taxi driving distance is around 150 to 250 kilometers. ठीक है. ये typical distance है. And similarly average daily driving distance is 40 kilometers. So range by each model should be this. ठीक है. It should be above, let's say, near to 1000 kilometers. इतना होना चाहिए. ठीक है. So these are certain informations which are being extracted across different battery cells and so अब हम इस काम को implement करेंगे. ठीक है. Across एक consumer study का हम data pick up करेंगे
और उसके अराउंड हम डेटा एनालिसिस करेंगे और हम देखेंगे कि क्या इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है. ओके, सो कल हम अपना एक डेटा सेट कलेक्शन करके विल अप्लाई नॉलेज डिस्कवरी फ्रेमवर्क ऑन इट एंड विल स्टार्ट एनालाइजिंग डेटा. ओके, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन. इज दैट क्लियर? ये बात क्लियर है?